Hi, good morning, everyone. Just joining everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. Okay, so just admitting everyone. Oh, there are so many other people as well. Okay, let me just join them. So, hope you guys are able to see the big screen now because I'm sharing that only. That makes sense. I think it was good last time also. So, I'm continuing with that. Okay. Okay, so okay, few more people joining. Mahendra joining. Okay, so Manoj, you need to tell me the reasons, because I will tell my reasons for the trade. Okay, आपने trade भेजे. I'm really happy to see that. Okay, Yeah. but also send your reasons why you're saying. See, I can see probably the reason that you are trying to do short trades are because it is at 40 resistance on daily. If that is Yes. if that is the only reason, then I will tell you the other side also. Okay, so let's see. We'll see both of this. So right now, just a few minutes back, just I have sent you the SMS regarding Escort. I think it's a double top, and M&M it is touching a lower band. Okay, so let's see. We will see that also when Okay. we cover the auto sector. So we'll surely cover both of them. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Thanks. So let's have the edit plus also ready because that is on the other screen. I will keep here. Okay, so these are the TP levels I sent you on Friday. Now let's see stock any ideas. Weekly analysis. Okay, so now this is going to be. So we had a very beautiful month end. Okay, so month end expiry was, I think, wonderful. We all made good money on both the sides. I think it was excellent. Right. So let's see now what we have in the start of the new year. So I think there will be 2 days in March, and then the April Fool starts with the first expiry. So it's the Fool's Day, and it's going to be expiry. So let's see what happens. Okay. So mainly we'll say 30th of March because um, 29th again tomorrow is holiday. See, we need to be very cautious in this week because it's going to be 2 days holiday. Okay, Monday and Friday markets are shut. You don't have any trading on those 2 days. Okay, so mainly what we will do it would be for uh, Tuesday to Thursday only. So it's mainly as per the first expiry, and it's going to be Fool's Day as well. So let's see what the market plays around with the traders, right? Does it fools the traders, or does it fools the people who are staying away? So we'll have to see that. Okay, so I think what we had last day, I think we are still at support. We have found the support at all these three levels. We bounced back strongly. So let's see where market has gone. We have broken this, but we came back about 33 again. So 33,500 also acting as good support, and now we have to see whether this gets crossed because 33,800 is a very very good support broken now. So whether we resist this or we break above this is going to be the scene that we need to see on the next week. So let's see on that. And I think we had few good trades. I think buy off this had triggered, we got some points and we moved out. It didn't hit the target, but it did went above that. Then even I think Escorts gave a good results. Ramco gave some points. बाकी कोई ट्रिगर ही नहीं हुआ एक्चुअली, एंड हम लोग ने प्री मैच्योर जिसको ट्रिगर किया ना उसने लॉस दिया था, तो LNT वाज प्री मैच्योर ट्रेड फॉर अस. ओके, सो हम लोग ने उसको 9 महीने के पहले बाहर निकाल दिया, तो बेचारा ड्रॉप हो गया, वो नहीं जिंदा रह पाया ज्यादा. Okay, so now let's see this week what we have in the plate. So let's do this. इसको भी 30th कर देता हूँ and we'll start immediately. Okay, I know it's a holy day. Okay, holy day भी है और holy day दोनों है, दोनों तरफ से होली होली है. Okay, so happy Holi by the way to everyone.
Maruti also triggered and we booked some minor profits. 3 रुपया ब्रोकरेज निकाला हम लोग ने, जबकि 5,000 के लिए रुक रहे थे, वो 5,000 दिया ही नहीं उसने. ओके, 82 के ऊपर जाता था तो हम बुक कर लेते थे. Right, so it's a beautiful morning. So let's start with the things. So where are we on Nifty? So let's start with Nifty. So Nifty weekly, which was looking to break 60, has taken support on 60. And if you look, we had a PRD setup 4 bar, which is now 5 bar. So still the 5 bar PRD exists on Nifty. Okay, so happy Oli Rajesh. So this is looking really good, and now the confirmation is about this week's high. So anyways, we had 14,850 as a buy. So now the buy is above 14,900. So there is still going to be the same way. We have a buy above 14,900 on Nifty for the PRD to confirm. Okay, and if that confirms, we see it purely a new high. Okay, so that is what it happens. And I think the year and month end is done. Corona is now done and dusted. Wherever the Corona started, it has been sent back. Now you might see this levels getting breached maybe. Okay, so this is looking strong on weekly. Monthly was always strong, and month is always with a spinning top, and volumes are mediocre. So still there is no sign of any reversions on monthly charts on any of the nifty things. Okay, so this does not look any bearish. Still above this, it will continue to stay above 60 also. Okay, so now is the chance where we go from here, and let's see daily. So daily did bounce from 40. So now everyone in top bottom would recollect. We closed on Thursday at 11:30, 12, top bottom in Nifty and Bank Nifty. The reason was very clear. What I was saying was look at where Nifty closed. Okay, it's the budget day gap support. It is the 40 support on daily with weekly and monthly at 60. So now everyone who has done simply indicators knows that it is one of the buy strategy of RSI that we preach. Okay, and as per that, if anything is at 40 with mother and father, okay, so weekly and monthly above 60, the son or the child is supposed to bounce back. Okay, so the notorious child has bounced, and though it is not following the orders of mama and daddy, still it can do between this. Okay, so it will be a sideways market until the PRD confirms. If the PRD confirms, I'll be not surprised to see daily moving above 60. Okay, so we need a bounce above 14,900. Okay, that is again because of this levels. ओके, सो इफ यू लुक एट दिस 14,800, ये उसका मिडल लाइन है या सेंटर बैंड है. इसके ऊपर में इफ इट स्टार्ट्स मूविंग वी विल सी द हाई ऑफ द वीक बीन ब्रीच्ड, and that is where we will see the movement higher than expected. Okay, so that is one school of thought that we might see the markets moving up. Now second school of thought says we are under this trend line resistance. Okay, so now if we break above this also, we become again bullish. Okay, so this is where you'll have to see where we can cross this line. So again, this line is below 14,900. So above 14,900, I would suggest you to take long trades. I think top bottom maybe उसी के ऊपर है 14,924 या 14,823 ऐसा कुछ level से जहाँ पे we are going long if I'm not wrong. Okay, so if I have to just see that, I think top bottom का निफ्टी का buy level क्या है 832. Okay, so this is where we are going long even on nifty. Okay, so this is where it should be long. So let's see. Okay, so थोड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर में रहेगा, और ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन उसका है 858 पे. ओके,
So there is a chance of there can be a breakout above this also. So 850 के ऊपर भी अगर आप buy करते हो Nifty, you can see confirmation on the PRD, which is still there as a setup, and it can move. And below this, anyways, we are not buying. Okay, so we are going to hold ourselves from any trade on Nifty till it breaches say 14 850 or 14,900. Above that, you might see it approaching 16,000. Okay, so that is where it is. So let's see where it goes. Okay, so this is where you can again see Nifty coming to 15,300, Okay, so if that comes, because that is where it PRD target भी वही आसपास में है. I think ये क्या है हाई इसका? Oh, we are at all time high on this. So 15,500 is here, and there is a difference of how much? Closing price का 578 और एक मिनट इसका देखने का ना 578 एंड 608 कुछ ज़्यादा नहीं है 40 पॉइंट ही है तो वही वो डबल टॉप उधर तक बना सकता है ओके सो वील हैव टू सी दैट इट माइट कम टिल 15,600 तक का टारगेट है पीआरडी कंफर्म होता है तो which is good enough target, right? So let's see that. So Nifty is looking quite safe to me so far. Okay, I'm not going to be bearish unless and until there is a 60 breaking on weekly or monthly. Okay, so till then I would be still saying it is good bounce from 40. Okay, and with right now we have got pro gap candle. Okay, pro gap small candle. Okay, this is Friday's candle. ओके वीकली अभी 5 बार और 9 बार हो जाएगा so 5 bar and 9 bar PRD setup confirms above 4900 it stays the same okay does not change at all see last week also उसने PRD setup तोड़ा नहीं है so that means there is still scope and my view was March में ये लोग नीचे लेके आएंगे because of the March ending year ending they have to square up with some losses towards the end so that जो भी profit था वो nullify या थोड़ा बहुत ये लोग करेंगे कुछ time पास and now there should be a fresh rally in the market so let's see what it does okay it won't be immediate but let's see how it starts with now on weekly closing basis with target new high okay so this is where it is now monthly doji above 60. So this is still looking good so far. There is nothing bearishness in Nifty. So I am not going to say that Nifty is looking weak at all. Okay, it's not weak by the way. Okay, अगर ये weak रहता था तो ये कब का 14,000 के नीचे चला जाता था. So it's not weak. Now let's see the levels. Okay, so we now need to see this cross 14,800. Okay, the first resistance that I'm going to put here is going to be 14,800. Okay, because that is a very good support been broken and now should act as resistance. Okay, ये सब बाद में करेंगे. In fact, 320 कुछ है. Okay, so this becomes your levels of resistance and support के लिए we are at support. See 550, 375 यही सब levels of bounce back हुआ है. Okay, and final if you want the last should be 14,000. Okay, so ये सब levels है support के right now. This was the level from where we bounced because that is the budget day का gap support. Okay. नहीं नहीं शूटिंग स्टार कहाँ से है भूषण वापस जाओ और शूटिंग स्टार क्या होता है समझो ये कैसे शूटिंग स्टार बोलता है तो शूटिंग स्टार में ऊपर नीचे दोनों वीक होता है क्या दिस इज इन सेंटर ये देखो ये इतना नीचे है और ये इतना ऊपर है शूटिंग स्टार का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए ना राइट सो ये शूटिंग स्टार नहीं होता ये सब it's a you can say it's a big doji or it is a spinning top okay सी शूटिंग स्टार इज दिस इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं उसके बाद देखो नीचे आया है ये शूटिंग स्टार है
थोड़ा और उसको वाइड करूंगा तो तुमको समझेगा. See, this is a shooting star. This is not a shooting star. ठीक है. वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, शूटिंग स्टार नहीं बोलते उसको. ओके, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. राइट, अभी अरे तराजू कहाँ से आ गया भाई. Bank Nifty is at 460 support. Okay. Now tell me anyone who has done RSI, who has done everything on RSI, simply indicators map. This was the first bullish range shift, and then the market zoomed. Now this is going to be the second range shift. What are we expecting there? मेरे को वीकनेस दिखा obviously. It's the first bullish range shift above 60, and the first 60 support is always very, very powerful. Look at this. This was the first 60 support, and then see one, two, and this was a bounce. So it almost went from 7,200 or 7,500 to 13,000. This is what it did in past. Okay, so गलती मत करना ये टाइम. सी यहाँ पे भी उसने वही किया है, थोड़ा ब्रीच करके वापस इट इज गॉन अप. ओके, so it's very very powerful thing that it is right now based into. And first thing that you need to understand is look at the volumes here. ओके, और वो ब्लैक का वॉल्यूम देखो. तो दो ब्लैक कैंडल है ना, उस दोनों ब्लैक का कैंडल का वॉल्यूम्स देखो. ओके, आपको लगता है कि ये लोग निकले अब तक, ये जो घुसे वो निकले ऐसा लग रहा है. दिस वाज अ प्योरली एग्जॉशन वॉल्यूम. ओके, एंड देन द एंट्री वॉल्यूम इन द अप ट्रेंड. ओके, सो एग्जॉशन के बाद अप ट्रेंड भी चालू हो गया. ये जिन जिन ने P1 का होमवर्क नहीं किया उनके लिए एग्जॉशन वॉल्यूम दिखा रहा हूं मैं आप लोग को इधर ही. ओके, एंड देन सी दिस एंटायर ट्रेंड हैज स्टार्टेड. दिस इज तो स्टिल स्टार्टिंग. पार्टी तो अभी शुरू हुई है. वेट एंड वॉच. सी दिस इज द फर्स्ट CIP. Look at where my red line is. Okay, first CIP here with first 60 support. Look at where it found support again on weekly, and that is the reason why we shut down on Thursday. Okay, अगर आप Thursday का मैंने क्यों बंद किया सोच रहे हो, this is the reason. Okay, 20 MA support. Okay, it bounced from also the CIP here. See, this is the CIP. ओके, तो ये भी एक रीजन था. मैंने भेजा भी था, आई थिंक एल्यूमिनी चैट पे मैंने भेजा भी था, द रीजन फॉर प्री क्लोजर. ओके, लुक एट दिस एंड दिस आर द टू टॉप्स. एंड ये ब्रेकआउट है इन द निर्मला कैंडल और द बजट डे. ओके, ब्रेकआउट इज विद ह्यूज वॉल्यूम. दैट मीन्स इट्स अ जेन्युइन ब्रेकआउट. एंड नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट CIP विद अ हैमरिश टाइप ऑफ कैंडल. और अगेन आई विल से अ डोजी ओनली. चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई अगेन दिस इज नॉट द मार्केट. ओके, फॉर सेल ऑन राइज जो ये 2 महीने में था ना, वो एक 1.5 महीने में वो भी खत्म होने वाला. अभी इट इज गोइंग टू बी बाय ऑन fall. Okay, that type of market will now commence. So let's see what even the chart speaks. See, it's also again at for 6, again coming up for 60 support. 60 तोड़ा ही नहीं, ना ही इसने तोड़ा, ना ही इसने तोड़ा, और ये 40 से बाउंस भी हो रहा है. So now look at this. Okay, it's not an island reversal again. समझो ये गैप नहीं है. Okay, और ये see it is a good hammer at support from where it bounced. Okay, and this was the main reason to even book the trade. And see, then you see a bounce. So now what we are expecting on Monday is at least, Monday to nahi, but at least in coming week, this will be touched. 34,800 should be touched. Okay, so let's see 1,300 points. We are going to see something over there. Okay, so this is going to be a critical resistance as well. Okay, this is going to be a critical resistance for the market.
If this is broken, we might then come back till 36,700, 36,800. Okay, ये level वापस दिखेगा. But this is critical. Okay, ये break होना चाहिए. And नीचे की side के लिए ये break होना चाहिए. Okay, so we'll need to see on both the sides, but mainly the thing seems to be more of bullish in nature. Now again, Monday is a holiday, so we don't know world markets में जो भी होगा उसका reaction double दिखेगा Tuesday को. Okay, so we'll have to be very careful on Tuesdays. Okay, so this is where even Bank Nifty is right now. So if I have to say this, daily piercing तो नहीं है, but daily gap up, small body above 40 at 40. Okay, weekly took support, budget week candle, and monthly above 60. So weekly at 60 and took support at 50%. In fact, it bounced till 61 तक गया था ये. अगर आप वीकली देखोगे ना, मेरे को वही देखने का था कहाँ तक गया था. See, if you consider from this swing, okay, so see we bounced from 61%, so this was another reason for closing the trade. Okay, so this is also one of the bounce back. So now if we bounce from here, ये यहाँ तक आएगा. So again see 37,800 तक, 34,800, 34,700 तक का तो रेंज यहाँ पे भी दिख रहा है. इसके ऊपर में निकला तो 35,700 and then again it will come till the high. So this is going to be, see, it was a golden ratio bounce. Okay, and that has been done. So now let's see what it does. And again, see, this is, volumes more out coming up here. This is the most bigger volume, and 50% of this is still been saved. Okay, so this is a genuine volume. अभी उसका आधा candle को भी वो support कर रहा है. So now let's see whether what it does now in the coming week. Right, so now let's put the support and resistance PRD on weekly. हाँ है, लेकिन बहुत सारे बार्स है महेंद्र. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है इसमें भी. So 9 बार PRD है, but I would leave it. Yeah, there is a 9 बार PRD, agreed. So let's mention that also. 60 9 bar PRD confirms above 34,300. Okay, and took support at अभी ये 61 हो गया. So golden ratio से bounce हुआ है. Okay, so this still looks good. Now resistances, we need to change this. Okay, सबसे पहला resistance है 33,800. तो उसको क्रॉस करेगा, फिर आएगा 34,270 है. जैसे 270 नहीं, राउंड नंबर्स ही रखेंगे हम लोग. 34,300 and then 34,800 as we have seen on the charts. Now support lies at 33,500, 33. Where we almost bounced. Okay, उधर नीचे टिका नहीं, इसके नीचे ज़्यादा टिका नहीं था वो. Okay, so these are the levels where we have on Nifty and Bank Nifty. Now let's quickly look into the other things. So let's go here. God.
गो करो ना, तो चलेगा, स्नीजिंग करो लेकिन गो करो ना भी बोलो, कोरोना की मेहरबानी है सर. Okay, so now let's see IT. See, IT में we had a bounce in TCS and all, but still see it is looking sluggish around this. Okay, and there's some bounce on in sideways market. See, इसको थोड़ा बहुत shooting. See, something like this is spinning top or doji. This is still looking like as a shooting star. Okay, तो इसमें थोड़ा विग देखो, इतना छोटू सा विग है वो. So that ratio of wig will make it either a shooting star or a doji. Hmm. So now we need to see ये इधर करता क्या है, इसको कुछ है नहीं इधर actually. We are waiting for this to break down actually. ये देखना पड़ेगा, ये 25,000 तोड़ेगा तो नीचे जाएगा IT. So we have to see stocks on that. Shooting stars है लेकिन 60 के ऊपर है. और ये क्या है 79 और ये 79.42. सो वी स्टिल हैव 2 days लेफ्ट. अगर ये 79 के नीचे बंद आता है, सो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इफ आईटी stays around this, we might see a 3 bar bearish divergence on monthly, and then we might see some fall on the scripts. So let's see. Okay, so ना गैप वैप मत देखो, गैप किधर है उसको. उसको यहाँ गैप सपोर्ट पे है, ये गैप सपोर्ट है, वही तो मैंने बोला ना. 25,000 नीचे की मैंने बोला ना, इट कैन गो डाउन. सो 25,000 इज दिस, तो यहाँ पे गैप भर जाता है. ये जो गैप सपोर्ट है वो भर जाएगा. यस यू आर राइट, देयर इज अ गैप सपोर्ट, बट दैट गैप सपोर्ट should be filled. So this is where the levels are. Main thing is it is still above 60 on the other two time frames, and this is sideways. So let's write down as well daily at price support and wedge breakout and first CIP. हाँ ये भी एक देखने का था ना. So ये wedge breakout था अपना, और उसी का ही इस पे अभी भी रुका है ये, उसी पे ही अभी तक रुका है. It can bounce from here, so we still have to see that. So it has still the support of the ट्रेंड लाइन. ओके, थोड़ा और नीचे ले सकते हैं. सो वही 25,000 के नीचे शॉर्ट आता है, उसके पहले नहीं आता है. ओके, सो डेली एट प्राइस सपोर्ट वेज ब्रेकआउट फर्स्ट सीआईपी ऑन वेज, फर्स्ट सीआईपी तो नहीं बट एंड सपोर्ट ऑन वेज बोलेंगे. ये कैसे चलोगे भाई तुम क्या. एंड सपोर्ट ऑन वेज वीकली स्पिनिंग टॉप नहीं, बट दिस टाइम वीकली शूटिंग स्टार है. ओके, नाउ अगेन सी शूटिंग स्टार कहाँ पे है वो भी देखना जरूरी है ना. शूटिंग स्टार एट सपोर्ट. ओके, सपोर्ट ऑफ व्हाट. सो एट कैप एंड 60 सपोर्ट. ओके, सो ये दो चीज भी है इसमें. ओके, एंड मंथली स्टिल इट इज बुलिश कैंडल अबाउट 60. ओके, सो लेट अस राइट डाउन हियर. ओके, इफ क्लोजेस below 79.4, okay, on 31st March, okay, we have 3 bar bearish divergence on monthly. Okay, मैं spelling अच्छा लिख रहा हूँ. Okay, so this is where we have to see the confirmation. So Wednesday को पता चलेगा.
Okay, now let's go ahead. Let's go to the infra one because वही पहले आएगा. See again, infra is looking good. I don't think so there is anything bad yet. Okay, थोड़ा ये देखो first 60 support and it had bounced. और शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस कर दिया और अभी उधर ही CIP पे है. I don't think so anything again is going to be. ये भी बजट डे के वहाँ पे ये 60 के ऊपर है अभी भी. Okay, so we might see stocks on this also. And daily is at 40 support and doji, pro gap doji. Okay, so pro gap doji is again important and it makes bounce. So I will have to see infra stocks for trading as well. It's looking good. Let's see FMCG. अरे सब में ये देखो प्रो गैप हरामी या तो प्रो गैप डोजीज बना पड़ा है. And this pro gap is above this, so लीवर जरा ढूंढना पड़ेगा. See again a very big spinning top. See this, but that spinning top is at 60 resistance. So now the buy in FMCG stocks should be only if it crosses the high. See this. See again a very good example of a spinning top. See, ये देख लो ये कैंडल कैसा दिखता है. This is a spinning top. Okay. See, I'll show you the difference between a doji and spinning top as well. ये doji है, फिर ये डोजी है. ओके, ये डोजी है, बट ये स्पिनिंग टॉप है. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज डोजी, डोजी, स्पिनिंग टॉप, प्योरली अ हैमर. ओके, एंड शूटिंग स्टार किधर है क्या नहीं है इधर. सी प्योरली अ शूटिंग स्टार. ओके, प्योरली अनदर शूटिंग स्टार. तो ये P1 में कवर होता है. ओके, जिस किसी को करना है वो कर सकता है. ओके, बट यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना. ओके, so this is a very good example of spinning top at support but also not able to cross. So this also means we might see sideways movement in this particular index. Okay, it's a spinning top. ओके, वॉल्यूम तो इसमें पता नहीं चलता क्योंकि इसमें ट्रेड नहीं होता. एंड monthly we need to now see whether it goes above 60 or it resists 60. ओके, तो ये भी 2 दिन के बाद ही पता चलेगा. ओके, सो देयर इज अ चांस. नीचे आओ थोड़ा, तारी तो लगेगा नीचे आनी. हाँ, see there is one more possibility in this. Okay, and this can go up. किधर क्या करना. So we might see a new high on FMCG. Okay, this can come. So more almost you are thinking of what? 4,500 points on FMCG. Okay, so this is what we will have to wait and watch. ये जो पूरा है वो ऊपर तक जा सकता है. So we need to see where we close the month. By the way, उसके पहले डिसीजन मत लो. रुको रुको थोड़ा रुको. ओके, क्योंकि इसके ऊपर में भी बंद नहीं आना चाहिए. ओके, 34 300 400 के ऊपर भी बंद नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर वो बेरिश डाइवर्जेंस भी बनाएगा 4 बार. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ जाता है और कहाँ बंद होता है. ओके, इसके ऊपर में बंद आया है, समझो ये हाई पे ही बंद आया तो समझ लेना कि ये बेरिश डाइवर्जेंस सेटअप भी है. ओके, so that's why we need to be very careful in the next 2 days. ओके, हैप्पी होली. रंग से खेलो लेकिन इधर फिर हरा के जगह पे लाल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. ये भी तो एक होली है. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. सो FMCG is looking okay so far. Let's see now. Let's write down
what we are seeing on FMCG daily long green candle above upper band at 60 resistance. ये अभी निकाल दो. Okay, so daily pro gap bullish harami. Okay, at 20 support. Weekly spinning top at MA 20 support and 60 resistance. ये भाई उसका 60 का दिया कैसे चलेगा? Monthly might see 4 bar bearish divergence. Setup, see this I have already mentioned last time. Okay, so this we need to be sure. Okay, क्या करता है? बाकी it is looking good. Okay, so now let's see. So है थोड़ा बहुत, we'll have to now take care. Okay, we had a very good Humpty Dumpty had a great fall. Now let's see whether the Humpty Dumpty survives or not. See again a doji at 40 support. So pharma is looking. Uh, you see, this is also a very good example of. If you look at this, okay, it's a very good example of first bullish range shift. See, 40 के नीचे से 40 के ऊपर आया. ओके, इधर सपोर्ट है और यहाँ पे डोजी से it is showing you the range shift. So now if this is crossed, or maybe you can wait for the shooting star high to be crossed, this should come. So look out for Dr. Reddy, Cipla, Oro, DVs for some buying opportunity. Second thing that you can see out here is somewhere like this. So again there is going to be some buying above this. You can say it is doing, see, उल्टा हो गया ये, sorry. Okay, lower bottoms, okay, high lower tops. So it is doing right now lower top lower bottom, and if this is crossed, okay, इसके में ऊपर में, so this becomes a new bottom, okay, which is going to be the higher. So there can be a lower top lower bottom ka end, and we might see a higher top higher bottom getting in place again in daily time frame. Okay, so this is also possible on pharma, and it's also first bullish range shift. ये भाई मैंने सब लाइंस के लिए बोला था बेटा, तू क्या कर रहा है? ओके, सी वीकली शोज गुड, सपोर्ट पे ही है ये. देखो लोअर बैंड सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट 27 को, यहाँ से बाउंस बैक, एंड राइट नाउ इट इज अगेन अ बुलिश हरामी above 40, and see again a spinning top at 60 support and still at gap support. See this, अब तक भरा ही नहीं हुई है और 2 दिन बाकी है. So we'll wait. Okay, so this sector, ये पता नहीं क्या करना चाहता है. And also I think there is a PRD setup here as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar PRD setup. Look at this. So there is many things possible in the market. If it zooms, don't be surprised. Okay, zoom बराबर zoom possible है. Okay, so daily में क्या देखा? डोजी at 40 and first bullish range shift. Okay, weekly bounce from 49. weekly ऐसा सब नहीं लिखने का गंदा चीज. Weekly took support at lower band, and current week bullish harami. Okay, monthly shooting star बनते बनते, ओके, इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं मंथली शूटिंग स्टार था वो, अभी उसके जगह पे स्पिनिंग द टॉप बना दिया उसने. स्पिनिंग टॉप above 60 and 5 bar PRD setup.
अभी 5 बार का 6 बार हो जाएगा, ठीक है. So still this looks good to us. Now let's see the last sector, the favorite of all, the notorious also, क्योंकि मारुति टॉप बॉटम में बहुत बजाता है हमारी. ओके सी, लुक एट दिस अगेन, फर्स्ट 60 सपोर्ट पे, सीआईपी पे, क्या है ये. सी, ये टूटने तक तो मैं तो शॉर्ट नहीं करने वाला भाई मार्केट में. नो डाउट we made good money in PE this week, but I am not going to short this. See, where are we? First CIP. See this. First CIP, first 60 support, first bullish range shift. इतना है इसमें ना, जितना देखोगे उतना कम पड़ेगा. ओके, मिसेस गुडिनो है ये. कितना भी करो कम पड़ेगा. नेकी कर दरिया मेरा. ये भी देखो, बाउंस बैक इज एट 50%. Okay, so we are at 50% of retracement from the hammer. Okay, so still there is a lot of steam left. Let's see what does the market. इधर एरो क्यों आया भाई, कौन सा एरो है वो. और ये थोड़ा डाइसी है because see this has got this, but now if you look at the clear picture, अभी I want to just inform you all, इन्वर्टेड कप नहीं होता है. ओके मेरे को बीच में किसी ने डाला था, देयर इज एन इन्वर्टेड कप इन बैंक निफ्टी एंड इट कैन कम डाउन टिल वेयर इट स्टार्टेड द रैली फ्रॉम. भाई कप हमेशा सीधा रहता है, तुम उल्टा कप में दही भी जमा के रखोगे ना वो भी गिर जाएगा. ओके, कप कप होता है भाई, वो उसको अलग से इन्वर्टेड कप ना किसने इन्वेंट किया ना, उसको लेके आओ पहले. ओके, ऐसा इन्वर्टेड कप जैसा कोई फंडा नहीं रहता है. अभी यहाँ पे भी तुम सोचोगे ये इन्वर्टेड कप है, इसके लिए मेरे को बोलना जरूरी है कि इट इज नथिंग कॉल्ड एज इन्वर्टेड कप. कप कप होता है वो ऊपर ही रहता है और उससे बुलिश ही पैटर्न है. कप में आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो इन्वर्टेड कप, ऐसा सब सब खुद राइमिंग्स खुद से मत बना लो. ओके, जस्ट understand there is nothing something like that. Okay, and now let's see what it does. So auto sector is little bit on the downside, we can understand that, but let's see this. Okay, it's now at support, and again on monthly it is at CIP and first 60 range shift. So if your father is strong, okay, Dhirubhai Ambani is strong, okay, उसके बाद मुकेश अंबानी इज ओके, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है. ओके, अनिल चाहे नीचे भी गिर गया है लेकिन उसको आकाश और ईशा से ऊपर लेके आएंगे. Okay, so let's see whether this does anything good for us or not. So auto right now it is in 50-50 zone. So let's see what we are into. Hammer at 40 तो नहीं है. Now this is daily doji but below 40. Okay, BRD सब चला गया इसका. Okay, weekly at price support but below 60, monthly above 60. ओके, तो ये 60 60 40 60 60 इसमें से भी निकल चुका है, बट मंथली अबाव 60 एंड चांस ऑफ फर्स्ट bullish range shift. So this is where we see auto sector. Okay, so auto sector we'll see where we are and then we will decide what to do. Okay, so now let's see the other things. एक मिनट, वो जो नहीं बोल रहा है उसको मैं म्यूट कर देता हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स सी इंडाइसेस. और ये अभी स्टॉक्स चालू कर दे फटाफट. सो लेट्स मूव बैक टू डेरिवेटिव्स and let's start with my favorite, my Reliance.
क्योंकि 2 हफ्ते से वो बेचारा ट्रेड के जोन में तो आ रहा है. Okay, so monthly looks good. It is about 60 and see 50% of this candle is still being defended. Okay, we are at support on here as well. 20 MA support. Oh, hammer at lower band and 40. So yes, straight away buy trade hai. 2025 के ऊपर बाई किया जाए. Yes, it is looking good. I think किसी ने भेजा भी था, प्राची ने, I think she had sent. So this is looking good. See, it said price support, RSI support, everything is there. So let's take this trade, okay, and mention it on the book as well. So Reliance buy above. अभी ये पूरा अप्रैल ही है, मैं भी अप्रैल ही देख रहा हूँ. 2025, ओके. So uh, so around 35 points risk, but you might get 75 rupees. Okay, so this is looking good. So we got the first trade in my Maruti, no, my Reliance. Now let's see Amar sir's favorite ACC, because I was looking into this week and I found, ये shooting star देख के मन कर रहा था, but मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया फिर, because it is at 60 support and this is also looking good. But now let's see this. Okay, ये एक reason that I wanted to see this 65.63 and 64. Okay, so there is a bearish divergence 4 bar. Okay, and with bigger wicks. Okay, it is going to a new high and it is trying to fall back. Okay, I know many broking houses has given 2300 का target भी इसका, but I am not mainly concerned with that. I want to see monthly closing above 60 for the first time. So is it going to happen or not? We'll see this. There is a short trade on this. Okay, so this is the resistance as well on here. So 1775 or 1880 is acting as a very strong resistance here. We need to see whether it is able to cross this, and with that we can think of shorting it if it goes below this. Okay, so this is going to be your short trade. Okay, so short is below 1850. You can expect it to come till almost 1810. Okay, so this is one line and this is where the support is actually 1802. So that's why we are making it around 1810 as the target, 40 points, and your stop loss will be 1880. Okay, so let's give that also the thing. So ये दोनों अभी भी है ना, जिंदा है, टाइगर जिंदा है. ओके, इसको खाली नया लेवल्स में दे दूंगा, बट ये दोनों जिंदा है अभी भी. ओके, सो वी विल सी दैट एज वेल. सो आई थिंक एल एन टी भी थोड़ा जिंदा है, तो आई राइट नाउ न्यू फॉर ए सी सी. रैमको, एक मिनट, रैमको निकाल दूंगा, बहुत ढीला है. Sell below 1850. 8100 कौन लिख रहा था तू? ठिकाना ही नहीं है. Okay, so this can be the stop loss, and we can revise the stop loss if it starts moving in the direction which we normally do. Okay, so this and ACC actually we'll have to see if it is a buy also above this doji high, because then it will cross 60 as well. Okay, and from this 1885 say it can come back to shooting star high. Okay, so there is both side trades possible in this. Okay, but right now it is at bearish divergence and we need confirmation.
Okay, so we are mainly thinking about a short trade below the doji low. Then let's go to ultra cam, because I know many people they like to trade this. See, it is at 60 resistance, and we saw that resistance is also with respect to price. Okay, so this is one. Then there is again, see, ये क्या है इसका close 6 8. अच्छा, there is no bearish divergence here, but this also has got a similar setup like ACC. Monthly तो जाने दो, ये ब्रेकआउट के बाद वो पगला गया है. See this. So this is looking good, but let's say I would avoid this right now. Ultra type. मैं इंफ्रा के हिसाब से देख रहा था इसको. Okay, let's see Tata Steel. Daily is at 60 resistance, upper band resistance. Weekly is looking good. There is nothing here. Okay, it's looking absolutely fine. Monthly तो अच्छा खासा ब्रेकआउट है इसमें. स्टॉक स्प्लिट कमिंग इन एसीसी, दैट इज फाइन. वो सब न्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ता है. ओके, उससे कुछ ज़्यादा ये नहीं है. दिस इज एट ब्रेकआउट, बाय द वे. इट इज ऑन द वे टिल 868 900 का लेवल्स वापस ये स्टॉक देख सकता है. मंथली इट इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. छोड़ दो इसको. We need to see what it does on Monday. Monday to नहीं, Tuesday. It can be a buy above this. Okay, but हम जाने दो Tata Steel. Okay, so now let's see. Maruti will start with auto sector. Okay, okay. By the way, what do you see here? ये क्या है ये? Can anybody tell me what is this? जिस किसी ने भी कैंडल स्टिक्स किया वो बता सकता है. So we are at price support. Okay, we are looking for 40 support on weekly. There is a bullish divergence on here. Hmm. We need the gap to be closed. So Maruti we need to remove from the stock. Okay, so this lets us remove this. Okay. See, ये गैप वाला है, वो मेरे को पसंद नहीं आता है. ओके, गैप जब तक भरता रहे ना तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मारुति का बाय on TB is above the gap. See, 7195. So we are good to buy above that. Okay, so let's follow top bottom only for Maruti. Okay, इसके ऊपर में ही buy आता है. बस हो गया. फिर then we are fine. We are not interested to buy it within the gap. Okay, so let's see. So Maruti is little bit okay. Let's see escorts. So I think Manoj had sent his thing, but now see again you need to understand we are at price support. Okay, so this is the price support. See this, and it's a doji or a harami. See, it's a harami only. Yeah? Black है तो भी क्या हो गया? ये small body है embedded into this, so it's a uh, bullish harami only. Whether it is black candle or white candle does not matter. It is still bullish harami. Okay, so bullish harami at support, and then maybe around 40 is the RSI. Weekly also we are at price support, and maybe एक मिनट मेरे को सब लाइंस निकालनी है. Okay, so almost the low came till the hammer low. Okay, so you can say that we have retested the hammer now.
So if hammer low breaks, okay, we might see of shorting it. So I think Manoj, आपके इसमें आपने शॉर्ट डाला था 1255 के नीचे. I would be Yes. thinking of only shorting it if it breaks the low of the hammer. Okay, but Okay. immediately if it breaks the hammer low, it comes till lower band support. Okay, so आपको मिलेगा 48 कुछ है इसका लो 48 से 25 can be your target or 28 can be your target, and by Okay. that time it will come to 40 support also on weekly. Okay, so I Okay. will suggest I will not go short right now because even monthly is above 60. Okay. Okay, so there is potential that it might break down, but looking at daily, it is looking good. Okay, and daily has got resistance here. So 1300 के ऊपर ही मैं buy suggest कर सकता हूँ. Okay, so till 1335 you can see it rising, but I would still suggest for waiting for this Harami to either confirm on upside, and if this is broken, to be short on the downside. Okay. Okay. Yes. ये सब बजट डे के सपोर्ट पे रुका है अभी एक्चुअली. Okay, let's see. M&M also what he had suggested was a short. किधर गया भाई? Okay, so now again see monthly it is a shooting star type of a pattern but above 60 and can be a first bullish range shift. Weekly is taking support at 20 MA and bounced. So if it breaks, I think your level was 788. It should be below 784. Okay, Okay. 20 MA के नीचे ही short होता है. And if Ah, you are shorting it, 800 should be a stop loss, or 805 actually is the stop loss. okay. I have taken 800 stop loss and You seven. have taken 788 is your entry and 800 is your stop loss. Okay, Right. according to us, it should be 785 or 84 is your short level and 805 is your stop loss. Okay, sir. Yeah. Okay, so that is how it is. But we need to see whether if it crosses this, then it's a buy. Otherwise, it is a doji at 40 resistance, and Okay. also first CIP on the support on the resistance side. Okay, so now if you look at this, okay, I was supported breakout, supported, broken, and this can be the first resistance. Okay, so this is a good trade. Okay, so you trade only if it breaks the doji low, but that doji low again becomes 98. तो वो तो तुरंत ही आपका शॉर्ट ट्रिगर हो जाएगा और आपका जो एंट्री है ना वहां तक भी आपको अगर 10 रुपये मिलता है लेके निकल लो. Okay, so this is also Okay. okay. So you can get the 10 points from 98 you short till 88, and then if it goes further down, you continue. So 784 will be entry, huh? 784. 784 is on the longer time frame, but if you are looking on daily, it Ah, should be below 798. okay. Okay, and in that case, 728, 18 or 8, क्या है ये 820 becomes your stop loss. So 22 rupees anyways is the risk that you'll be taking. Okay. Okay, because see, this is immediately because it might resist 40 and you might see the fall. Oh, Okay, so you need to see Tuesday where it is opening. okay. Okay, then only take a trade because it might bounce above 40 or it might resist 40. So it Okay. will depend on that. So अगर open high देखता है सुबह में तो then you can go short with the open high as the stop loss क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है. Ah, Okay, market will give you the direction with open high same. okay. Okay. So that is where my name is. Let's go to MRF. There is some actually see auto sector itself was below 40. Okay, and see even MRF has got the same way of breakdown. इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं दिख रहा है so we are not getting any good trades in auto sector yet. This is actually but ये मंथ खत्म होने दो और 2 दिन है उसके बाद अगर अच्छा ट्रेड दिखा तो विल डू इट. See, it's a first CIP on the cup. Okay, so this is the first CIP on the cup. Resisted, resisted,
breakout, and now it is the first CIP. So whether it holds 81,000 or not, we need to see in the next week. Okay, so MRF also I'm not citing anything. Okay, let's go to finance. Let's go to HDFC Bank. HDFC Bank is about 60 on monthly, तो कुछ देखना ही नहीं है उसमें. ये भी 60 के सपोर्ट पे हैमर है. ओके, 1520 is fine. Okay, we have already bounced from 40. So this is looking good. Okay, HDFC Bank. Okay, let me just add here. भाई किधर है? मैं किधर चला गया? So 1515 was last March वाला entry था. Okay, I'm going to put it as 1520. Okay, and target. Let us see what is the next target now. ये इधर गैप है. So 1550 तक का आएगा, and stop loss will be still 85. Or we can keep the gap also. Okay, so we'll revise the stop loss to 90, and this is to 50. It's 1:1, 30 points up, 30 points down. Okay, because there is a gap there. हाँ 1523 था, लेकिन अभी कंटिन्यूस डेटा आ गया ना. So now we can do it on regular basis. अभी वो कंटिन्यूस डेटा आ गया इसमें भी. और एक वीक के लिए आपको 2 महीने का डेटा कंबाइन करना पड़ता है, बट अभी वो हो गया है. ओहो, ये तो अभी भी वैसे ही है. सो ये दिस इज ओके टू बाय अबाउट 595. आई थिंक वही रहते हैं 590 एक्चुअली. सो दिस कैन बी बॉट अबाउट 590. 577 है ना, तो 577 is the stop loss. And my expert 600. Yes. Okay, so this is okay. अरे हैमर at 60 बाप रे. बैंक निफ्टी भागेगा. Okay, so बैंक निफ्टी should run now. Now ऐसे ऐसे बैंक 590 बराबर है, 60 के बराबर है, 700 बराबर है. Okay, okay. So this is looking okay to me. Okay. So this is looking fine to me. So you can have the same trade on ICICI. Okay, escort निकाल दो. Escort निकल जा. Okay. Now let's see. I think LT हम लोग सीमेंट में छोड़ दिया था, वो देख लेते एक बार. हाँ, see LT is also bounce back. See, ये कौन सा है? मैं LT डाला और कुछ और ही आया, मैं भी सोच रहा था. Oh, so it has crossed and now again. So I think we have 1430 के ऊपर. So this is where the gap closes. So let's buy above the gap. Okay. डोजी एट 60. चलो काम हो गया अपना. डोजी का हाई क्या है? 1420 है ना. ठीक है. ओके 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 ओके. सो LNT also looks good. Okay. So 1430, 1485 and 1400 same remains. So this is still looking okay to us. Okay, so these are right now the 5 trades we got. Now let's start. We saw finance, we saw Siemens, infra, auto. अभी इन्हीं बजाज क्या बोलते हैं वो खाली एक बार देख लेते हैं. आज हम लोगों ने हमारा बजाज नहीं देखा है, बट ये बजाज देख लेते हैं. ये भी ठीक लग रहा है, बट हाँ ये सब देखो 60 पे हैमर बना के बैठा है.
एंड प्राइस सपोर्ट भी है उसको, सबको प्राइस सपोर्ट से बाउंस है और 60 सपोर्ट है. So there can be a good bounce in all of this. Let's see. एक छोटा कंपनी देखते हैं. और ये भी 40 से बाउंस है. वीकली ये भी 60 पे हैमर है. So something to come up on this front, huh? Housing companies or finance companies is having something coming up. Input क्या करता है बेटा? ये भी 40 क्रॉस किया. ये भी हैमर at 20 MA and gap support. Look at this. So there is something in finance coming up. Okay. So सब में मेरे ख्याल से एक ही टाइप का पैटर्न है और सब में एक ट्रेंड लाइन है ऐसा वाला. ये टूटते ही योर एंट्री शुड बी फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट्स. फाइनेंस कंपनीज आर लुकिंग रियली गुड. देखो जब जब भी हैमर आया है 20 MA पे ही आया है और देखो पॉसिबल है. ओके. सो लुक एट द हिस्ट्री, इट विल रिपीट. ओके. मार्केट में आता है ये सब चीज. ओके. सो फाइनेंस इज लुकिंग गुड. ऑटो थोड़ा स्लगिश है. ओके. एंड सीमेंट्स भी थोड़ा प्लस माइनस है. सो नाउ लेट्स सी आईटी और पहले फार्मा कवर करते हैं. डीआरएफ क्योंकि वो बाइंग वाला आइटम पहले खत्म करते हैं. Can expect this is starting, so this is looking good. हमारा DRR is back. Mr. Reddy got offended. He didn't selected it last week. So now it wants to be the part of the rally. Yes. Target है ना पहले. ठीक है. This is also looking good. Now let's see the beach. The beach में okay. ठीक है. वीकली और डेली दोनों RSI वाइज ऐसा सेम सेम क्यों दिख रहा है? 52 50. हाँ इसके लिए एकदम पास पास में. और ये इधर हैमर बना के बैठा है पॉपर. Again we'll have to wait for this because it has to take support somewhere or show us there is a support. एक लाइन का सपोर्ट है but वो चला गया है. Now it is already 100 points up, 110 rupees up. So now it does not make sense. See again इसने भी see support CIP पे लिया है. Again there is one more pattern here. See. Okay, ये देखो आप लोग आराम से. So base बनाया है, breakout, sorry resistance, breakout, support, 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 and now wait for this breakout.
Okay, it will zoom बराबर zoom नहीं. Okay, so it can be bought above 3600 actually. 3600 for a target of almost 300 rupees. Huh? So this can be a positional buy actually. एक मिनट रुको. ये सब स्विंग्स है, ये सेमी स्विंग हो सकता है. सेमी स्विंग है, सेमी पोजिशनल. आई मीन यूज देम. ओके भाई, अब वो एक मिनट क्या बोला था मैंने. 3600 600 और मे बी इट मे गो हायर. कैश में भी ले सकते हो. हाँ, ये अगर चाहिए तो. It's not a huge trade. If anybody is wanting, can take it even in cash. Okay. Possible to touch the all-time high. What is CPLA saying? CPLA is not saying anything. Oh, open high same. See, this is what I am telling Manoj. If you see M&M में ऐसा open high same, तो immediately short कर सकते हैं. Okay. सर फिर से एक बार देखेंगे ओपन हाई सेम का. ये देखो ना, ये रहा 807 हाँ 807. हाँ. ओ ओ हाँ. ओके, सो ये तुमको तुरंत 5 मिनट में पता चल जाएगा. उसके बाद देखो कभी आए ही नहीं. It's a very good strategy if you have a short trade in your mind, and if the market supports saying open high same, so you should short immediately. ओके. तो सिप्ला देखा, और नहीं देखा ना. वाह, और 40 सपोर्ट से बाउंस है, बट अगेन दिस इज aha, this has got a pro gap candle bullish harami. Sorry, it's a bull sash actually. बुल सैश है इधर. वापस स्पिनिंग टॉप है. हो क्या रहा है, मार्केट पूरा जंगल हो गया है. ये करना चाहिए ऐसा है. तो दिस इज आल्सो लुकिंग गुड. बुलिश दिख रहा है ये भी. बट अभी दो फार्मा ट्रेड हो गए, ज़्यादा नहीं दे रहे हम लोग. ओके, सो वी सॉ फार्मा, वी सॉ ऑटो, फाइनेंस. कौन सा बचा? टीसीएस. TCS, Mindtree, we'll see. Okay, so now let's see what it is. ये भी sideways है. सी, इसको ऊपर में गैप रेजिस्टेंस है, ये देखो. ओके, और नीचे में गैप सपोर्ट है. ओके, सो नीचे खाई, ऊपर कुआ. गिरेगा तो गिरेगा किधर मालूम नहीं. साइडवेज. जब सर तक इसमें ब्रेकआउट नहीं उसको छोड़ दो. हाँ, बोलो बोलो. आइलैंड रिवर्सल है ये 3 कैंडल्स में. हाँ, ये 3 में है. हाँ बस. और बट सी अगेन, आइलैंड रिवर्सल के लिए यू नीड अ बिग, थोड़ा बिग ब्लैक. इट इज अ डोजी. ओके, सो ये दो डोजीज है. सो उसके हिसाब से उसका ये भी मिल गया उसको. स्विंग लो जो आना चाहिए था ना, वो आ चुका है. वो आ चुका है. Okay, and then it has got a bounce back. So now if it falls, it should fall below this again. Okay, ओके so सर. we'll have to see that. Devan bhai, hey, island या reversal, yes, you are right. थैंक यू सर. So this is fine, but now what it is showing, see, it is ये वापस ये देखो, ये दोनों वही दिखा रहे हैं. See, it is resisting 3170 mark, but it is also getting support at 3000. ओके, उस दिन भी वो गिरा गिरा गिरा. आई थिंक ये फटाक से बाउंस मारा था 3000 से. एंड नाउ सी, इवन दिस we need to see if it closes above 3140, then there is a 3 bar bearish divergence here also. So अभी वही देखना पड़ेगा. आईटी इतना भागा है ना, वो भाग भाग के थक गया अभी. So we'll have to see now where we move on. So TCS 9,
So let's see. I think someone said Mindtree. अरे बाप रे, सी ये जो सेटअप है ना, ये बहुत गड़बड़ वाला सेटअप है। ओके, ये किधर भी जा सकता है, इसको भी नहीं मालूम कि ये किधर जाएगा। ओके, सी इसको हम बोलते हैं, अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन नेट, ओके, या तो फ्लैग। ओके, सो पैलेट, आई थिंक द अदर टेक्निकल वर्ड इज पैलेट, बिकॉज फ्लैग इसको नहीं बोलेंगे। ओके, सो ब्रेकआउट कैन टेक यू, मैंने ये कहाँ तक से लिया था, यहाँ से यहाँ तक लिया था ना, तो यहाँ से दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर ये यहाँ से नीचे गिरा ना, तो इवन दिस इज द पॉसिबिलिटी। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ पैटर्न। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है ना, RSI is showing some tiredness, okay, it going down. But the thing is, none of the white candle is above this candle. तो इसका RSI highest है और प्राइस भी हाईएस्ट है। तो जब तक एक व्हाइट कैंडल इधर बड़ा आता नहीं है जिसका RSI इससे कम हो, तब तक ये गिरना भी चालू नहीं करेगा। So you have to be very very careful with such stocks. Okay, so थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, ये कुछ भी कर सकता है। Okay, weekly is looking okay. So see again, weekly का range is in that doji only. Okay, और ये रेंज 10 दिन का है। सो 2 हफ्ते से, ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स यही इसमें है। ओके, सो वीकली में ये दोनों कैंडल ने एक ही जगह पे भरा है, और नाउ देयर इज अ चांस कि दिस कैन बी अ ब्रेकआउट ऑफ द अपसाइड। सो वी डोंट नो आईटी सेक्टर क्या करना चाहता है। तो जब तक ये इसका हाई क्रॉस नहीं करता है, ओके, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है ना, आई वुड नॉट सजेस्ट एनी ट्रेड ऑन द बाई साइड। ओके, वेट एंड वॉच। सो 2050 के ऊपर बाय करो यार, इट इज वेट फॉर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। बट इफ इट मूव्स अबाउट 2050, इट इज श्योरली गोइंग टू गिव यू अ गुड अमाउंट। और ये आईटी स्टॉक्स तो पागल की तरह भागते हैं ना, उनको तो ऐसे ही है ना, इस रात की सुबह नहीं, ऐसे ही भागते हैं। टाइम भी नहीं मिलेगा तुमको एंट्री करने के लिए। तो इट्स बेटर इफ यू आर वाचिंग इट, यू शुड बाय इट। एंड दिस इज अगेन अ गुड ब्रेकआउट कैंडल हियर। So this is looking good. See, it was a buy at least at 1825 itself. If you are following charts, यहाँ पे वो buy था, breakout above the doji high or this particular candle's high, and then see it just went till almost on 2040. So it went up by almost 200 points. So nothing bad here, but see now it is in consolidation. So let it break the consolidation. TCS भी देख लिया, HUL बाकी है। हाँ सरफ सर, HUL बाकी रहा हमारा लीवर। अच्छा, FMCG पूरा सेक्टर बाकी है। मैं कौन सा एकदम आराम से बैठा है इधर, मैं सोच रहा है अपना ये लास्ट सेक्टर है। नहीं नहीं, वो पूरा बाकी है। आई सी दैट FMCG बाकी है। ये भी इंफोसिस भी बेटा क्या कर रहा है, ये देखो ट्रायंगल फॉर्म करके सब बैठे हैं, किधर फटेगा मालूम नहीं है इसमें भी। ये देखो exactly, look at the resistance level. Okay, and now look at this. ये ब्रह्मास्त्र बना के बैठा है, एरो में रामायण चालू है, किधर जाएगा मालूम नहीं। लुक एट इट टेकिंग सपोर्ट आल्सो मीडियम पे। यार ये क्या है, मतलब ये क्या चक दे इंडिया है क्या? हाई राम भी तो सीधा जाएगा, ऐसा साइडवेज ही जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। इट्स शोइंग यू अ वेरी गुड वेज फॉर्मेशन। Okay, it's an equilateral wedge, so you need to see breakout either on the downside or the upside. So this is what it is. ये तो अच्छा ही दिख रहा है। So this is looking good at support, doji at support actually. इसमें कुछ bearish हिस्ट्री है। मैं कितने टाइम से आई एम जस्ट थिंकिंग, यू नो, दैट TCS के सामने this is much more better. Okay, so this is much more better compared to TCS.
So Mindtree ये देखा एक टेक महिंद्रा देख रहे थे उसके बाद we change the sector with this. Okay, now this has got the same setup as the other things. उसमें भी bullish bearish divergence का setup possible है इधर भी है. We will have to see this. So TechM is not looking that good, but 60 support पे doji है. इसके ऊपर buy होता है. Again, this has got the same thing यार. क्या है? Perfect trend line है ये देखो ना. कोई टेंशन ही नहीं है इसको ब्रेक करेगा तो बाय करो. So 1020 या 1010 के ऊपर बाय है. You might see it going till 1044, and your stop loss would be around 985. So 20 rupees risk and almost 40 rupees reward. 1005 से 1045 and 1005 से नीचे में 985. लेट्स सी हिंदुस्तान यूनिलीवर एशियन पेंट वो सब बाकी है अपने एवरग्रीन तो बाकी रह गया है. ठीक है. एनीबडी नोज मार्जिन फॉर टेक महिंद्रा? इज इट विद इन द रीच? एनीबडी हु इज ट्रेडिंग टेक महिंद्रा किसको मालूम है उसका कितना है मार्जिन? 2-2.5 लाख वाला मार्जिन वाला मेरे को नहीं चाहिए इसके लिए. अदरवाइज आई हैव टू डू गूगल आउट. मतलब मेरे को जूम पे इस पे जीरो दा पे पता तो चल जाएगा. बट यस, I'm just making the trade here. Okay, it is looking good as a buy. Buy above 1005. अच्छा 2,68,000. बाप रे. MIS में करेंगे वाके. इसके लिए मैं ये सब स्टॉक्स देखता नहीं है यार. ये सब सेटअप अच्छे देते लेकिन फायदा क्या सेटअप का. आचार डालेंगे हम. 268 तो बहुत बड़ा है यार. मिस्टर गुलेचा ये तो हमारा 3.5 लाख का पूरा मार्जिन इसी में खा जाएगा. इसके लिए इसको MIS ही करेंगे फिर. SL is 985. और लॉट साइज क्या है इसका? व्हाट इज द लॉट साइज? एनी आइडिया? 1300 है या 800 है? 1200. बाबा 24,000 का नुकसान. जाने दे बाबा. नहीं नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. नहीं 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 चाहिए. जाने दे. नहीं चाहिए. ट्रेड ही नहीं करना. मिस्टर लीवर has started with the pole. Okay, look at this. This is a bull sash. Okay. Now, if it crosses the high above this, so जो 22338 है, मेरे ख्याल से वो तो ट्यूसडे को ओपन नहीं खोल देगा. 2344 के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट इट टू. अरे बाप रे गैप है इधर भी. इसको क्या गद्दा लड़का है. लेट्स सी. 2237 तो 40 रुपए का ही ट्रेड बनेगा यार. See this. So I would wait for a good trade to short this. Monthly is approaching 60. If it crosses this, it will cross 60. Then we'll buy. So Renedo, I would suggest Renedo. इसका क्या है क्लोजिंग? 2394. अरे बाप रे. ये भी 4 बार बेरिश डाइवर्जेंस का प्रिपरेशन कर रहा है क्या? इसके ऊपर में जाएगा. ये 2400 के आसपास में बंद आता है. Then it might have again a bearish divergence. ओके. और इसका कंडीशन क्या मालूम है? ये हमेशा बेरिश डाइवर्जेंस मार मार के ऊपर जाता है. So we'll have to see what it does actually. So Hindustan Unilever I would wait, and then let's see last one, Asian Paints. एशियन पेंट ने अच्छा जादू किया है. 60 से बाउंस. डेली में ब्रेकआउट. आहा. My dear friends, we do have a trade on hands.
60 approach कर रहा है. See, it had first bearish range shift, then it had a fall down. Now it is approaching here. So wait, I think ये इसको भी इधर रेजिस्टेंस है 2564. Think of shorting it if you see something bad on hourly or 15 minutes around 2564. Okay, so let's wait and see what happens. Okay, by the way, since Monday is holiday, अपना जो live trading सबके लिए रहता है, it will be there on Tuesday. And anyways, live trading for even subscribe users is getting over on in March. So 31st March will be the last. Okay, and then we'll concentrate more on stock ideas. Okay, so mainly stock ideas is going to be the thing, and we are doing some good work on stock ideas. Okay, so I'll just share a few results. I know many of you have already been subscribed. So this is March for us so far. Okay, so last week, see Reliance, LNT, Bank Nifty. So we had few hiccups. Okay, and then this went higher also. Okay, so छोड़ दो. So this is March for us. February we didn't have much trade because my son's 10th exam was on. He was in 10th standard and he completed, so was not able to concentrate much more here. And this is January. Okay, so we had a trial month in December that also had 45,000 profit. Okay, so mainly the purpose is to double the capital in a year time. Okay, so mainly we are focusing with 3.5 lakhs as your capital. So if you get an average profit also of say 40,000 around per month, you still end up with more than 100% profit on your capital. So that is how we are doing in stock ideas. Okay, and now on you will see much more intraday trades also, because I will be free from the live trading, and whenever I see a good setup, will be posting more intraday trades as well on stock ideas now. Okay, so that is what my commitment is. So we'll see how it uh, goes up. Okay, and my plan is that we can at least get decent trades on day-to-day basis for every one of us. Okay, so that's it. I think we covered everything, and let's enjoy Holi tomorrow. Okay, be safe. Cases are increasing, so play with your known people only. Okay, and just enjoy. Okay, so thank you everyone, and see you on Tuesday for the live trading. Happy Holi.